सुखानां तुष्टिरुत्तमा लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा दानं धर्मश्च विद्या च रूपं शीलं कुलं तथा दानं धर्मश्च विद्या च रूपं शीलं कुलं तथा सुखमायुर्यैश्वर्यैव नवा गोप्यानि यत्नतः सुखमायुर्यैश्वर्यैव नवा गोप्यानि यत्नतः. For this superb rendition, dignitaries may kindly take their seats. We offer our prayers to Lord Dhanvantari. It is believed he destroys aging, diseases, fear and death. He nourishes this world and possesses knowledge about various medicinal plants. Lord Dhanvantari is known as a father of Ayurveda, and we bow to him. We have one more beautiful tradition to be followed. Atithi Devo Bhava. Ladies and gentlemen, we would now like to welcome our distinguished guest by presenting them a token of appreciation. I request Sri Ranjit Puranik, Trustee, World Ayurveda Foundation, to welcome our chief guest, Dr. Pramod Sawant. I request Dr. Rabi Narayan Acharya, Director General, Center Council of Research in Ayurvedic Sciences, to welcome Honorable Shri Shripad Naik Ji. Thank you, sir. I request Dr. Sunil Kumar to welcome our guest. We have with us esteemed ministers from the state of Goa and from other states of India. May I request members of organizing committee, Dr. Sunil Kumar, to welcome them with a pious idol of Lord Sri Dhanvantari. Honorable Sri Vishwajit Rane, Minister for Forest, Health, Urban Development, Women and Child Development, Government of Goa. Honorable Shri Govindji Gavde, Minister for Art and Culture, Sports and Rural Development Authority, Government of Goa. Shri Chetan Singh Jauramajra, Minister for Health and Family Welfare, Medical Education and Research and Electronics, Government of Punjab. Shri Daya Shankar Mishra, Minister of State for Ayush, Food Security and Drug Administration, Government of Uttar Pradesh. I request Dr. Sunil Kumar to welcome Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush, Government of India. Thank you, Dr. Sunil Kumar. We are also today honored by our support group, who not only in monetary terms, but in spirit and their own personal involvement, make the series of World Ayurveda Congress meaningful and vibrant. May I now request member from Organizing Committee, Vaidya Sneha Bhagwat, to welcome our important support group. Assembled here today we have Dr. P.M. Warrior, Managing Trustee, Arya Vaidyasala, Kottakal, and World Ayurveda Foundation, Institutional Patron.
Please welcome Professor Anup Thakur, Director ITRA Jamnagar and Secretary General 9th World Ayurveda Congress. Please welcome Dr. Rohit Sane, Managing Director, Vaidya Sane Ayurveda Laboratories Private Limited. Shri Arvind Varchasvi, Chair, Internal Delegates Assembly and Managing Director, Shri Shri Tattva Limited. Thank you, Ma'am Sneha. I now request Shri Abhay Bhamakar to welcome the guest. Dr. Ram Shroff, Director, Charak Pharma Private Limited. Ashtavaidyan, Dr. E.T. Neelakandan Moose, Managing Director, Vidyaratnam Aushadashala Private Limited. Shri Gulraj Bhatia, President, Healthcare Division, Emami. And Dr. Rabi Narayan Acharya, Chairman of the 9th World Congress Scientific Committee. Thank you, sir. It is said a warm welcome is never complete without warm words. It's with great pleasure I now welcome Dr. Jai Prakash Narayan to give welcome address. Dr. Jai Prakash Narayan. With pranams at the lotus feet of Ashwini Kumars and Lord Dhanvantari, our most respected chief guest of the day, the Chief Minister, Ashok Savanji, and all the respected VVIPs on the dais, Yashwant Sawaji, our Secretary of the Ayush Rajesh Kotecha ji, the member of the trustees, Ranjit ji, and all the great experts and the officials on the dais and off the dais. It gives me immense pleasure to welcome all of you on this great day of the 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo, the inaugural function. It is all happening because of the Lord Dhanvantari's grace and the great support by every one of the people who have assembled here. This great event is happening the 9th one. So far the 8th World Ayurveda Congress have been conducted and the Arogya Expo also. This is the 9th one which is happening here in Goa. Goa itself is an international place where people all over the world come here, and many delegates have come from all over the nook and corner of the world, and Ayurveda experts are here, the scholars are here, and the students who are the great torch bearers of this science of medicine. Today Ayurveda has become very popular all over the world, and people have been utilizing the knowledge of Ayurveda to maintain their health. And the experts, various ambassadors from various countries, the foreign delegates that have come here, and all the students who have come here to participate in this World Ayurveda Congress. And the esteemed ministers from the state of Goa and also from the various states of India, and the organizing committee members, they are all here now. And with all that, the Praveen Ramdas ji is also here, the National Secretary of the Vijnana Bharati, and Professor Anup Thakur ji and
our secretary, Rajesh Kotecha ji, all of you are here. And I would certainly like to mention the name of every individual who have assembled here. May Lord Dhanvantari bless you all to conduct this 9th World Ayurveda Congress and the Expo in the greatest success way. And I am sure the world over the Ayurveda, as our Prime Minister has taken the yoga, and the Ayurveda will also reach the global corners everywhere and help to maintain the health of the humanity. With these great words, I again welcome each one of you for this World Ayurveda Congress and wish you all a great success. Thank you very much for giving me this opportunity to welcome. Thank you. Thank you very much, Dr. Jai Prakash Narayan, for these warm words. The journey of World Ayurveda Foundation or World Ayurveda Congress is quite interesting. The start, the pickup, the ups and downs. Friends, we have with us Shri Chetan Singh Jaur Majra, Minister for Health and Family Welfare, Medical Education and Research and Elections, Government of Punjab. We warmly welcome him, and I request Shri Abhay Bhamaikar to present him idol of Lord Shri Dhanvantari and welcome him. Shri Chandrasekhar Nayak, please welcome Honorable Chetan Singh Jaur Majra. Thank you. We were speaking about the journey of World Ayurveda Foundation. The start, the pickup, the ups and downs. We would like to know about it a little bit, right? I now request Shri Praveen Ramdas, National Secretary Vijnana Bharati, to throw some light on the journey of World Ayurveda Congress. Shri Praveen Ramdas. Sir, you may please like to use that podium. धन्यवाद। वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गोवा सरकार के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित 9वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में पधारे इस प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, आदरणीय श्रीपाद नाइक जी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आदरणीय सुनील जी आम्बेकर विज्ञान भारती के मार्गदर्शक, आदरणीय राजेश कोटेचा जी सेक्रेटरी आयुष, विभिन्न प्रदेशों से पधारे आदरणीय मंत्रीगण, हमारे विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का हर बार सहयोग देने वाले हमारे प्रायोजक गण और इस सभागार में उपस्थित आयुष मंत्रालय के आदरणीय ऑफिसर्स, विज्ञान भारती के कार्यकर्ता और भाइयों बहनों, विज्ञान भारती विगत 30 साल से एक स्वदेशी आइडियोलॉजी को लेके, भारत के अंदर एक स्वदेशी भाव को लेकर कार्य करने वाला एक विज्ञान आंदोलन है। विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्यों में एक यही है कि जो भारत के जो विज्ञान है, जो हमारा विज्ञान का जो एक बड़ा विरासत है, जो हमारा भारत की ज्ञान परंपरा है, उसको समाज तक लेके जाना है, विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्यों में एक है। और इस उद्देश्यों के साथ हम कार्य करते आ रहा था और 2002 में विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ताओं को लगा कि हम बहुत साल से आयुर्वेद को लेकर छोटे मोटे कार्यक्रम करते आ रहे हैं,
एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम को करना चाहिए, ऐसा विज्ञान भारती के उस समय के जो नेतृत्व, जिसमें माननीय जय कुमार जी, आदरणीय वासु जी, डॉक्टर सुरेश कुमार और हमारे बीच में डॉक्टर गीता कृष्ण, सुनील जैसे लोगों को ऐसा लगा, और हमने इस विचार जब समाज के सामने रखा तो लोगों को लगा कि लोगों के मन में एक उत्कंठा था कि आयुर्वेद के लिए इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है क्या। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एर्नाकुलम ग्राउंड, जो कोच्चि में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमने जब सम्मेलन का आयोजन के बारे में सोचा तो लोग हमसे पूछा, इतने बड़े सम्मेलन में क्यों, इतने बड़े ग्राउंड बुक करने की आवश्यकता क्या है? आयुर्वेद की कार्यक्रम तो छोटे मोटे क्लासरूम और छोटे छोटे हॉल में होता है, आप लोग इतने बड़े कार्यक्रम करने का क्या आवश्यकता था? और हमारा कार्यकर्ताओं का जो उस समय का नेतृत्व का जो एक तरह का कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ पूरे आयुर्वेद समाज के, आज माधव गुट्टी साहब हमारे साथ बैठे हैं, पहले आयुर्वेद सम्मेलन से उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया, और उस समय लगभग 1800 डेलीगेट्स पूरे दुनिया से 22 देशों से विज्ञान भारती का उस आयोजन में, और वो भी विज्ञान भारती के केरल का इकाई स्वदेशी साइंस मूवमेंट ने होस्ट किया था। और उस समय भी भारत सरकार का आयुष मंत्रालय उस समय नहीं था, उस समय जो डिपार्टमेंट ऑफ ISM एंड H, इंडियन सिस्टम एंड मेडिसिन एंड हेल्थ, उन सब लोगों के सहयोग से विज्ञान भारती ने उस कार्यक्रम को किया, और बहुत अच्छा एक आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और बहुत अच्छा एक समाज से हमको बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन उस कार्यक्रम से मिला। 2006 में विज्ञान भारती को औद्योगिक रूप से ऑफिशियली पूना यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आया कि आप लोग दूसरा विश्व आयुर्वेद सम्मेलन पूना में करना चाहिए। उस दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन और आयुर्वेदा इस विषय को लेके हमने पूना यूनिवर्सिटी में 4 दिन का कॉन्फ्रेंस 6 से 12 नवंबर 2006 में हमने आयोजित किया। 2002 के बाद 2006 में हमने दूसरा विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया, और उस समय 1800 डेलीगेट जब पहले था, वहाँ से हम 3500 डेलीगेट्स तक पहुँचा, और 30 देशों से प्रतिभागी पुणे में आया। और बहुत गर्व का विषय यह है कि पुणे विश्वविद्यालय के अंदर, अगर पुणे विश्वविद्यालय का गेट से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर हमारा प्रदर्शनी लगा था, और उस प्रदर्शनी देखने के लिए उस समय 3.5 लाख लोग हमारा प्रदर्शनी देखने के लिए आया। तो आयुर्वेद के लिए जिस तरह का एक रुझान हमको पुणे से मिला। उसके बाद तीसरा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हमने जयपुर में 2008 में 16 से 21 तारीख तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में हमने होस्ट किया। उसमें भी 36 देशों से 36 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए, और हमारा आयुर्वेद सम्मेलन भी एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा। बहुत बार बार बताने की आवश्यकता नहीं था। उस हर समय हमको डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का, उस समय तक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था, उनका पूरा सहयोग हमको मिलते आया। 4th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद कांग्रेस के अंदर एक गेम चेंजर था। 4th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हमने 9 से 13 दिसंबर में बेंगलुरु में हमने होस्ट किया। उस समय पहली बार एक प्रदेश सरकार हमको सहयोगी देने के लिए कर्नाटका सरकार हमारा सहयोगी के रूप में आया, और उस समय भी आयुष मंत्रालय का पूरा सहयोग हमको मिला। और उस समय आयुर्वेदा फॉर ऑल उस थीम के साथ हमने कार्यक्रम किया। उसी में हमारा इंटरनेशनल डेलीगेट असेंबली जैसा कार्यक्रमों का शुरुआत हुआ। मैं बताना भूल गया, जयपुर के आयुर्वेद सम्मेलन में विज्ञान भारती का एक नया कार्यक्रम नस्या, आयुर्वेद विद्यार्थियों युवाओं के लिए एक नस्या नाम का कार्य भी शुरू हुआ था। और 4th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जब बेंगलुरु में था तो लगभग 5 लाख लोग उस प्रदर्शनी देखने आया। और वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद 1 महीने तक बेंगलुरु के अखबारों में, वो चाहे अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, वहाँ के उस अंग्रेजी और उन सारे अखबारों में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारा इस आयुर्वेद को लेके हुआ। एक आयुर्वेद का एक अच्छा इकोसिस्टम बेंगलुरु में उस कार्यक्रम के बाद सम्पन्न हुआ। 5वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस मध्य प्रदेश शासन के साथ हमने 2012 7 से 10 दिसंबर में भोपाल में
आयोजित हुआ, जिसमें हमको मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का भी सहयोग हमको प्राप्त हुआ। उसमें भी बहुत बड़े संख्या में लोग प्रतिभागी आए। 2500 के आसपास डेलीगेट्स रहे, 21 देशों से लोगों का प्रतिभागी रहे और लगभग 3 लाख लोग हमारा प्रदर्शनी देखने आया। उसके बाद 6वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन हमने 6 से 9 दिसंबर 2014 को प्रगति मैदान में हमने किया। उसमें एक बहुत बड़ा उपलब्धि ये था कि हर बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारे एक स्पॉन्सर के रूप में आता था और सारा सहयोग देता था। उस पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इस कार्यक्रम में विज्ञान भारती के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए एक ऑर्गेनाइजर के रूप में आयुष मिनिस्ट्री हमको सहयोग दिया और उसमें हम सबकी सौभाग्य था कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य हमको 9 दिसंबर के समापन समारोह में हम सब लोगों का उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे ये बोलने में गर्व है कि हमारा ऐसा एक सौभाग्य हुआ कि 9 दिसंबर को 5 बजे हमारा समापन के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना व्याख्यान दिया। उसके बाद 1 घंटे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी उद्घोषणा हुआ। हमें लगता है कि ये विज्ञान भारती और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन और सभी आयुर्वेद के लोगों का एक सौभाग्य है। उसके बाद 6वां आयुर्वेद सम्मेलन हमने कोलकाता में लेके गया। आयुष मंत्रालय का भी एक इच्छा था कि कोलकाता जैसे प्रदेश में जहां आयुर्वेद का जितना प्रशस्ति होना चाहिए वो नहीं है, उस तरह के केंद्र हमने लेके गया और वहाँ पे भी विज्ञान भारती और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 3500 डेलीगेट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा एक सहयोग हमको आयुष मंत्रालय से भी उसमें मिला। स्ट्रेंथनिंग द आयुर्वेदा इकोसिस्टम, इस थीम में हमने उस कार्यक्रम को आयुर्वेद सम्मेलन को आयोजित किया। पिछले जो लास्ट जो 7th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो हमने गुजरात में आयोजित किया, आदरणीय नाइक साहब, श्रीपाद नाइक साहब हमारे मंत्री था और राजेश कोटेचा जी, सभी लोगों का बहुत अच्छा एक सहयोग मिला। एक बहुत अच्छा विश्व आयुर्वेद सम्मेलन हमने वहाँ पर आयोजित किया। 2500 के आसपास डेलीगेट और 18 देशों से लोगों ने रिप्रेजेंट किया और हमारा गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका उद्घाटन किया। और अभी हम 8वां विश्व आयुर्वेद 9वीं विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में खड़ा है। परशुराम की धरती से जो शुरू हुआ था, गोवा को भी लोग परशुराम की धरती से ही बोलते हैं। तो इस आयुर्वेद की सम्मेलन में, आयुर्वेद की जो यात्रा में विज्ञान भारती और वर्ल्ड आयुर्वेदिक फाउंडेशन के लोगों को मन में बहुत उपलब्धियां हैं। एक बड़ा उपलब्धि ये है, एक बहुत बड़ा आयुर्वेद समाज को इस अम्ब्रेला के नीचे लेके आने के लिए हम लोगों ने सहयोग किया। मैंने पहले बताया कि जब हमने केरल में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बारे में सोचा था तो मुट्ठी भर लोग भी हमको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। आज हम वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ साथ भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और कम से कम 50 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स और 300 से ज़्यादा स्टॉल के लोग और लगभग 5000 डेलीगेट्स हमारे बीच में है। ये आप सब लोगों के सहयोग के कारण है। इस बार जब हमने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बारे में सोचा गोवा में करने का, तो गोवा सरकार ने हमको सारे सहयोग देने के लिए तैयार रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बहुत सारे बैठक लिया। फिर भी हमारे विज्ञान भारती का जो प्रेरणा स्रोत थे हमारे माननीय जैन सहस्त्रबुद्धे जी, सितंबर 3 तारीख को उनको एक सड़क हादसा से उनका एक्सीडेंट हुआ। आज भी वो हॉस्पिटल में है। तो बहुत मुश्किल था विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं के लिए, पर हमारे विचार परिवार के सारे अधिकारियों ने, जो चाहे अतुल जी नेमे हो, हमारे सुमंत आमशेकर जी हो, हमारे सारे जितने भी विचार परिवार के सारे अधिकारियों ने विज्ञान भारती को और वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को अपने सारे सहयोग दिया। गुजरात सरकार, गोवा सरकार के मुख्यमंत्री और उनके पूरे अधिकारीगण हमको सहयोग किया। इसके कारण ही हम आप सब इतना बड़ा एक भव्य आयोजन लेके आपके साथ खड़े हैं। तो आप सभी को 2002 से लेके जो इस प्रयाण में हमको सहयोग देने वाले सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।
Sorry for this technical interruption. We thank Shri Praveen Ramdas for sharing with us the journey of World Ayurveda Congress. Ladies and gentlemen, we are witnessing a splendid inaugural festival of World Ayurveda Congress, the 4-day event. What is this going to be like? What will the delegates receive in these 4 days? What are the focal areas? What are the programs? What are the objectives behind this? Let's hear it from Professor Anup Thakur, Director ITRA. Professor Anup Thakur. A request to all the speakers to please use this podium only. Today's chief guest, Honorable Chief Minister of Goa, Vaidya Pramod Sawantji, all the honorable ministers, all the guest of honors and dignitaries on the dais, off the dais, and dear friends. Today, Ramdas ji has provided you the journey of the WAC, and I'm going to present in front of you in coming 4 days what activities are going to take place. I am going to give you a bird eye view. The first WAC was organized at Kochi in 2002, and now this is the 9th WAC is being organized. And during this journey, it has taken the event of the world class, and many new feathers has been added through this journey. So this time the focal theme of the WAC is Ayurveda for One Health. Actually, our Honorable Prime Minister has given the logo that One Health for One Nation by achieving One Health for One Nation by 2030. And looking to that, this time the focal theme is Ayurveda for One Health. And in this WAC, I would like to say in the brief that more than 5,000 delegates has registered, and first time more than 3,000 papers were received. So you can imagine the scale of the WAC and the popularity of this event among the scholars of Ayurveda and other allied sciences. Then in this WAC there will be 150 invited keynote speakers, and there will be international delegates from more than 35 countries. This is biggest ever in the WAC, and this is a really achievement for the WAC event. And then there are 400 expo stalls. This expo is also a ever big expo of Ayurveda, first time after 2002, and that is also it is happening in the Goa. And then 3 lakhs visitors are going to visit this expo and the conference. I won't go into detail because we are running short on time. I will brief the program that there are plenary sessions, then the concurrent sessions, invited lectures, oral paper presentation, then poster paper presentation, and first time we are introducing e-book presentation. The papers who have come, we cannot accommodate them all in the oral and poster, so there will be an e-book presentation that is also introduced first time. Then there will be 6 plenary sessions during the WAC, and the timings will be from morning 9 a.m. to 12:30 a.m. And in this plenary session, the topics will be expanding scope of Ayurveda. Then that was today morning it took place. And then the new age prospects, whole system approach to foster and strengthen the research ecosystem for Ayush system, innovations and entrepreneurs in Ayurveda, Ayurveda for One Health, and environmental footprints, Ayurveda perspective. These all are very innovative and new subjects are being discussed by the different stalwarts during these plenary sessions. And then in concurrent sessions, there will be parallel sessions, and there will be 5 parallel hall will be there, and they are given the name of the
the Vaidyas who are renowned and who are not with us today. So in that respect, the hall's name is given, that Vaid Anil Panse Hall. Heal in India session will be there. Then Dr. S.N. Oja Hall, Ayurveda Education in the light of NEP, New Education Policy, will be discussed. Then Vaidya Deepak Gume Hall, in that Ahar Kranti, the revolution in diet, will be discussed. And Vaidya Anant Bakhale Hall, workshop on shoulder joint pain and Ayurveda. Then the Vaidya Vithal Suktankar Hall, and in that workshop on informatics will take the place. A total 24 invited lectures in 6 halls, and each talk will be of 15 minutes, and oral paper presentation will be followed by that, and poster presentation will be followed by that. There, as I told, there will be a biggest Ayush Expo. More than 400 stalls will be there, and it is ever biggest. So every participant should visit that hall. And this time there will be 12 associated events. There will be associated events by NCISM, National Council of Indian System of Medicine. All the principals of the colleges of Ayurveda have been invited, and their deliberations will take place in that associated event. It is on 8th and 9th. On 10th December, there will be international conclaves on Pashu Ayurveda. This is also happening first time, veterinary Ayurveda. International delegation assembly is there on the 9th and 10th December, and big number of delegates are there to participate in that. Then there will be a Rashtriya Ayurveda Vidyapit Guru Shishya meet is taking place on 8th and 9th. National Medicinal Plant Board seminar on medicinal plant is there on 11th December. Ethnopharmacology and traditional healers meet is there on 8th and 9th. Then Ayush Sexil buyer seller meet is also going to take place, and I would like to inform that international buyers also has joined us, and they are going to take part in this event. Then there is a WHO conclave on the traditional medicine of the Southeast Asia region, and all the 11 countries members are already there, and the members from the WHO headquarters are also there, and they are going to take participation in these deliberations. And then first time these events are going to happen, that Ayurveda Short Film Festival. There are 52 entries, and they are being judged, and the results will be declared. That is on 10th December. Then Ayurveda and Jyotish Vignan, this is also first time introduced in this week. That is on 10th December. And then development of innovation ecosystem for innovative Ayurveda. There was a global investment summit, and from there Ayush Ministry has taken many steps for the innovations and development of that ecosystem. Those things will be discussed there. And again, there will be Ayurveda and media meet. Friends, you know that Ayurveda is developing on the emerging as a world medicinal system, and the surge has been noticed that there is Ayurveda is being popular like anything in last 5 years. And media sometimes is not aware about that and how to propagate. So to fill that gap, there will be a Ayurveda and media meet also will be organized. Lastly, I will finish my speech with the vision of Honorable our Prime Minister. In the Gayas, he said that Amrut Kal of next 25 years will prove to be the golden period of the traditional medicine that our Honorable Prime Minister has visualized. Let's come together and make our Honorable Prime Minister's vision come true. Thank you all. Thank you, Professor Thakur. Before we move on, we would like to acknowledge the presence of Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Phaldesai. A warm welcome, sir. I now request
Vaidya Shekhar Kotecha, Secretary Minister of Ayush, Government of India, to speak a few words on this occasion. Vaidya Rajesh Kotecha. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Honorable Union Minister Sri Sripad Nayak ji, Honorable Sunil Ambekar ji, the patron of Vigyan Bharati, Honorable Ministers of the Goa and from different states, all the other dignitaries, organizers, all the dignitaries of this dais, my pranams to all of you. First of all, I would like to convey the sincere gratitude and best wishes from both the ministers of Ayush, Honorable Sri Sarbanand Sonowal ji, Cabinet Minister of Ayush and Ports and Shipping and Waterways in Government of India, and Honorable Minister of State, Dr. Munjpara Mahendra Bhai, who is also Minister of State of Ayush and Minister of Women and Child Development. Both of our ministers were scheduled to come on today, but because of the Parliament and their questions in the Parliament, they were not able to join, but they have conveyed me that their hearts are there and they will be arriving tomorrow and they will stay for the rest of the conference days. We all know that this is the 9th edition, and Praveenji rightly said that on 9th November 2014 we had our Honorable Prime Minister came into the valedictory function of then World Health Conference at Delhi. On the same day, the Ministry of Ayush was formed, and now we are here, assembled here for the 9th week, and our Honorable Prime Minister is again coming in valedictory on 11th of this month at Goa. So from that valedictory to this valedictory, lot of things has happened. Not only a separate Ministry of Ayush has been formed, our then Minister Sri Sripad Nayak ji is here, and under his leadership, Ministry of Ayush has evolved multifold. For example, in 2014, when ministry was formed, the budget of the ministry was less than 700 crore, to 691 crore to be precise. And this year, our projected budget, which is agreed upon, is more than 3,600 crore, which is more than 5 times. So in 8 years, the budget of the ministry grew for more than 5 times. Same thing is reflected in the businesses. In the manufacturing sector, we had a study of 2014 by CII, and that study said that at that time the sector size was $3 billion, and we were visualizing that by 2022 we'll be going to $10 billion, because the study came out in 2017, and we were all talking that by 2022 we'll be reaching to $10 billion. But when we did another study based on 2020 data, we found that sector size already grew to $18 billion. So from 3 billion to 18 billion, thanks to these innovators and industry who is sitting here and sitting across and participating in this event, they all worked hard and made our sector and country proud by growing 6 times in 7 years. So that is another benchmark that has happened from that week, 6th week to 9th week. There are a lot of other things has happened. I will not cite everything, but I am mentioning few things for the as an encouragement to the students, because large chunk of these participants are students from different colleges. They are the future, and the future is very bright. Lot of things are happening, not only businesses, but in research front also. We know that in COVID, with the help of all universities, institutes, IITs, different research institutes like CSIR, DBT, ICMR,
We had instituted more than 160 studies. Out of that, more than 55 publications came out. A lot of other publications are under review process. And as an outcome, Ayush has a lot of contribution for the COVID management in our country. And traditional medicine was widely accepted. We had a study on impact assessment and we found that 89.9% of Indian population has used Ayush modalities during COVID as a prophylaxis, as a prevention, as a treatment. And this with the sample size of more than 1.42 crore, it's a 14.2 million sample size, which is more than 1% of the total population. So it shows that how much undercurrent is there in our country. Ayush 64 was the medicine which is repurposed. Kabasura Kodinir of Siddha also repurposed, and lot of other research front has happened during last 7-8 years. And at WHO this morning in our plenary session, Dr. Geeta Krishnan was mentioning that we are having a lot of inroads. Lot of new things has happened, like benchmark document of Ayurveda, Unani Siddha, of training and treatments has been published by WHO. ICD-11 morbidity codes, inclusion of Ayush terminology is also going on, and it will happen maybe in a year. Alpha draft is completed. In artificial intelligence in health group also, traditional medicine working group is being led by Government of India. Lot of other things are happening, but as an outcome, the WHO Global Center for Traditional Medicine is being established in India at Jamnagar. So this is a big thing, because any UN outpost until recently never have been established in any developing country. This is the first time it is happening in India. So I request all of you to applaud, because this is very big thing. And this is an opportunity for us of new possibilities, because traditional medicine global epicenter will be in India. And at the same time, Government of India has by act of Parliament made Jamnagar Gujarat University campus upgrading as an Institute of Teaching and Research in Ayurveda as an institute of national importance at the level of IIM, IITs and AIMS. So this is also another benchmark. A lot of such things has happened. NIA Jaipur was upgraded as a university, and now we are looking at inauguration of 3 National Institute Satellite Center on 11th by Honorable Prime Minister. One is in Goa of Ayurveda, one is in Narela, Delhi for homeopathy, and one is in Ghaziabad of Unani medicine. This is all together is a 1,000 crore projects, and which is being inaugurated in the same platform on this Sunday by Honorable Prime Minister. So I compliment the organizers of World Health Congress to make this a big platform, very big platform, biggest platform ever for the stakeholders. All stakeholders are here, not only the students and teachers, but practitioners, industry, academia, researchers, everybody is here. So this is an opportunity for this sector to come together, stay here for 4-5 days, and having a lot of networking. That has a lot of outcome. So thank the organizers and thank you all. My namaskar to all. Thank you very much, Shri Kotecha. Now I'm glad to invite on stage Shri Chetan Singh Jawar Majra, Minister for Health and Family Welfare, Medical Education and Research and Elections, who has come all the way from Punjab to speak a few words. ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਰੋਗਿਆ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਮਤ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ श्री सर्बानंद सोनवाल जी और श्री यशो नायक जी,
श्री विश्वजीत पी राणा जी सेहत मंत्री गोवा, श्री दयासागर जी मंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर महेंद्रा जी मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर गोविंद जी, श्री सप्तम राजन जी, श्री बाना प्रसाद गुप्ता जी, श्री राजेश कटोच जी सेक्रेटरी आयुष भारत सरकार और ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो आए हुए इस एक्सपो ਨੂੰ देखने वास्ते और ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों तो आए डॉक्टर साहबान, विद्वान और मेरे नाल पंजाब तो आए हुए डॉक्टर साहबान और ऑफिसर साहबान और बाकी देशों तो बाकी सूबे तो आए हुए सारे ऑफिसर साहबान पिछले 2 सालों तो जिहड़ा ये आयुर्वेदा जिहड़ा नहीं हो रहा सी क्योंकि कोविड कारण 2 साल गैप रहा। सो अज असी इत्थे पहुंचे हाँ ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे तो। बड़ी चंगी गल है कि सानू बहुत कुछ सीखने को मिलिया क्योंकि कोविड के समय दरम्यान बहुत सारिया प्रॉब्लम सारे देश की सारे वर्ल्ड के विच ही आईयां जिन्हां कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गवानी पई क्योंकि जिहड़ी इम्यूनिटी है जिहदी कमज़ोर सी उन्हां नूं अपनी जान तो हथ धोना पिया। और आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है जिहदे नाल उस समय दे विच जदों कि इंग्लिश दवाइयां नाल हर एक ने कोशिश की कि जान बचाई जा सके, पर कोविड के समय दौरान भी जिहड़ी आयुर्वेदा उहदे नाल असी बहुत सारे ने अपनी जान बचाई है क्योंकि सैकड़े सालों तो ऋषि मुनि जिहड़े आयुर्वेदा का इलाज करके उन्होंने अपनी उम्र है जिहड़ी हंडाई है क्योंकि उस समय दे विच इंग्लिश दवाइयां का इन्ना जिहड़ा बोलबाला नहीं सी, पर अज दे समय दे विच टैंपरेरी जिहड़ा इलाज है वो तो असी कर सकते हैं, पर जिहड़ा परमानेंट इलाज है वो तो आयुर्वेदा राही किया जा सकता है। सो असी भी जिहड़ा पंजाब दे विच एक यूनीवर्सिटी है जिहड़ी श्री गुरु रविदास यूनीवर्सिटी हुशियारपुर विखे चला रहे हैं, उहदे अंडर असी 16 कॉलेज जिहड़े चला रहे हैं और उहदे नाल ही जिहड़े 507 डिस्पेंसरियां 17 स्वास्थ्य केंद्र अते पंजाब ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ है उस तो भी ਵੱਧ के ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ चलाया जा सके क्योंकि आयुर्वेदा ਜਿਹੜਾ इंग्लिश दवाइयां नालों बहुत सस्ता ਜਿਹੜਾ इलाज है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ कोई शरीर का कोई नुकसान भी नहीं ਹੁੰਦਾ। इस करके ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ पंजाब 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ आयुर्वेदा ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ जा सके क्योंकि इंग्लिश दवाइयां नाल टैंपरेरी तौर पर तो असी इलाज करा सकते हैं, पर जे जड़ तो कोई बीमारी खत्म करनी है तो वह एको ही इलाज है आयुर्वेदा जिहदे नाल असी जड़ तो जिहड़ी बीमारी है उन्होंने खत्म जिहड़ा कीता जा सकता है। सो असी पंजाब दे विच हर एक तरह का जिहड़ा उद्यम करांगे क्योंकि साडे पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान वालों मैनूं इत्थे भेजिया गया, उन्हां वालों ड्यूटी लाई गई है और मैं इत्थे भी इसे करके कि असी भी कुछ जिथों किते कुछ सीखण नूं मिलदा असी सीख के पंजाब नूं भी जिहड़ा होर तरक्की है जिहड़ी ओह दवाईए। इस वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस विच देश विदेश तो आयुर्वेद नाल संबंधित अध्यापक रिसर्चर आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो जिहड़े लोग आए ने मैं उन्हां नूं भी बेनती करूँगा कि पंजाब दे विच कोई भी अपना यूनिट स्थापित करना चाहुंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ हर तरह की ਜਿਹੜੀ मदद है वो भी करांगे ताकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आयुर्वेदा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਰਜੇਸ਼ ਕਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਤਾ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਜੂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you so much, Honorable Chetan Singh Ji. I now request Shri Dayashankar Mishra, Minister of State for Ayush, Food Security and Drug Administration, Government of Uttar Pradesh, who is fondly known as Dayalu Ji, to share his thoughts with us. भारत माता की बहुत खामोशी है। एक बार फिर से जोरदार तरीके से भारत माता की वंदे वंदे। परम आदरणीय मंचासीन डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री गोवा, परम आदरणीय श्री श्रीपद नायक जी, यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार, श्रीमान सुनील अंबेकर जी, प्रणेता विज्ञान भारती, श्री चेतन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, श्री बन्ना गुप्ता जी, श्री स्पम रंजन सिंह जी, श्री अनिल विज जी, श्री गोविंद गुड्डे जी, श्री विश्वजीत पी राणा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट गोवा, श्री रंजीत पुरानिक जी, श्री प्रवीण रामदास जी, श्री वैद्य राजेश कोटेजा जी, इस सभागार में उपस्थित पिछले 18 वर्षों के इस आयुर्वेद के विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के हमसफर, हमराह और इस देश के ही नहीं दुनिया के कोने कोने से आए हुए तमाम विद्वज्जन, जिनके कंधे पर निश्चित ही आने वाले कल में, जैसे आपने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के बहुत प्राचीनतम विधा योग को सारी दुनिया में स्थापित कराया है, वैसे ही इस देश की हजारों वर्षों की जो सनातन इलाज की पद्धति है आयुर्वेद,
जिसका जन्म वेदों से हुआ है, उस विधा को भी दुनिया में स्थापित करने का बीड़ा उठाने वाले इस सभागार में उपस्थित सैकड़ों विद्वज्जन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है, 24 करोड़ की आबादी का राज्य, संसार के सैकड़ों ऐसे देश हैं जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश से आबादी के मामले में कम है। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के ईश्वर हैं, उनके मानवीय अवतार काशी नरेश दिवोदास, महर्षि सुश्रुत जिनको आप फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, पंडित सत्यनारायण शास्त्री जैसे वैद्य, महर्षि पतंजलि जिनकी कर्मस्थली काशी थी, योग के प्रणेता, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर की त्रैलोक से न्यारी दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी काशी, भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न पंडित रविशंकर सितार के प्रणेता, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रणेता, ऐसे महान संतों की, ऋषियों की, मुनियों की नगरी काशी का रहने वाला हूं। और एक और सौभाग्य है काशी का कि वो वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, संसदीय नगरी है, जिनके प्रयासों से बाबा विश्वनाथ का एक भव्य कॉरिडोर, जिनकी प्रेरणा से और योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज बाबा विश्वनाथ का भव्यतम कॉरिडोर जिस नगरी में बन चुका है, मां गंगा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का रहने वाला हूं। आप जैसे विद्वानों के समक्ष बहुत कुछ कहने को मेरे पास नहीं है, आज आप सभी को सुनने आया हूं, लेकिन एक ऐसे सूबे से आपके बीच में आया हूं जिसमें कुल 3959 आयुष के चिकित्सालय संचालित हैं, जिसमें आयुर्वेद के 2110, होम्योपैथ के 1584 और यूनानी विधा के 254, 50 सैया के जो नए एकीकृत आयुष के हॉस्पिटल बने हैं, जिनमें 11 बन चुके हैं, 13 आयुष के ऐसे नए 50 सैया के हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में और बन रहे हैं। कुल 19 राजकीय महाविद्यालय, 2 और नए राजकीय महाविद्यालय बन रहे हैं, कुल मिला के 105 आयुष के महाविद्यालय राजकीय और निजी क्षेत्र में संचालित हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में 195 योग वेलनेस सेंटर, 592 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को चयनित कर 500 हेल्थ वेलनेस सेंटर हमने अभी तक स्थापित कर लिए हैं। पिछले दिनों आयुष कोरोना के इस महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आयुष कवच ऐप बनाया, जिसमें 26 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें आज भी अभी सुबह योगा से शुरुआत होती है सुबह के दौर में। और अभी आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर दिन हर घर आयुर्वेद 12 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में हमने पूरे प्रदेश में के 22,960 विद्यालयों में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया, जिसमें 68,880 बच्चों को आयुष की विधा के बारे में जागरूक किया। 59,448 ग्राम पंचायतों की खुली सभा में आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहने, आहार विहार, योग और औषधि पौधों के घरेलू उपयोग के बारे में शिक्षित किया। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेरे जीवन में आयुर्वेद विषयक संगोष्ठी हमने 9 से लेकर कक्षा 12 तक के
विद्यालयों में कराया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों ने भाग लिया। इस तरह से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश निरंतर आपके इस मिशन का भागीदार है। हम बधाई देना चाहते हैं आयोजकों को। आपने उत्तर प्रदेश के एक आयुष मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम में आप सबने भाग लेने का अवसर दिया। एक बार फिर से आप सभी को हृदय की गहराई से इस अत्यंत सफल और शानदार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य योग के द्वारा कार्यक्रम में मुझको आमंत्रित करने के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. I now request Shri Sunil Ambekar, Mentor, Vigyan Bharati, to speak a few words. आज इस 90वें वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस में उपस्थित गोवा के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत, श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, पंजाब के श्री चेतन जी, उत्तर प्रदेश के श्री दयाशंकर जी, गोवा के और भी कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, और विशेषकर आयुर्वेद क्षेत्र के जिन्होंने अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से आयुर्वेद की साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बना के रखा है, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और आयुर्वेदिक क्षेत्र के बहुत सारे विद्वज्जन यहाँ हैं। सभी को प्रणाम, सभी को अभिवादन। ये वास्तव में उस आयुर्वेद की शुद्ध परंपरा को पुनः जागृत करने का एक बहुत बड़ा अभियान है। और ये अभियान की विशेषता ये मुझे अनुभूति में आ रही है कि इसमें सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकारें, उत्पादक, उसके प्रैक्टिशनर्स, सारे वैद्य, उनके विद्यार्थी और बहुत सारे हितैषी जो भारत की इस महत्वपूर्ण धारा को आगे बढ़ाना चाहते, वो सारे एक साथ जुड़े हैं। तो वास्तव में ये एक भारत के पुनर्निर्माण का, भारत को आगे बढ़ाने का एक महत् प्रयास है। और इसीलिए मैं इस प्रयास को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि कई बातें थी भारत में जिसके बारे में ऐसे लोगों को लगता था कि शायद वो अभी फिर कभी ऊपर नहीं उठेगी, परंतु देखते देखते स्वाधीनता के 75 वर्ष आते आते एक पूरे दुनिया में और पूरे देश में भारत के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसी बातें दुनिया में उभर कर आ रही है, जिसमें योग का उल्लेख हो सकता है। और आयुर्वेद अब तो पूरी विश्व में कोरोना के पश्चात इसके बढ़ती आकर्षण और समझ बढ़ी है। और इस दृष्टि से ये बात, जैसा मैंने उल्लेख किया कि भारत में जो भी ज्ञान पूर्व काल में कभी भी विकसित हुआ, वो ऊपर ऊपर से नष्ट होता हुआ या नीचे जाता दिखता है, परंतु ऐसे बहुत ऐसे अज्ञात साधक इस देश में हैं कि जो लोग बिल्कुल उस बात को संजो कर रखते हैं, और जैसे किसी बीज को कहीं दबाकर रख दिया हो, वैसा जैसे जैसे ये आयुर्वेद कांग्रेस जैसे उत्सव सामने आ रहे हैं, वो सारे बीज और उनके वृक्ष सामने निकल कर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये एक केवल हमारे कुछ सुविधा के लिए आयुर्वेद नहीं है, तो वास्तव में एक मानव कल्याण के लिए एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक मार्ग है। इस दृष्टि से
ये उभर कर आ रहा है, ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए हम लोगों के इस प्रयास को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम केवल अपना नहीं तो पूरे मानव जाति के कल्याण हम कर सकते हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। सभी आयुर्वेद के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत का जो जुड़ाव है आयुर्वेद से या हमारी हर ज्ञान परंपरा से, उसके जुड़ाव को इसमें महत्वपूर्ण आग्रह के रूप में रखना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी बात की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में तो मुझे लगता है शुद्धता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके गुण उसकी शुद्धता पर ही आधारित है। और इसलिए अगर मूल आयुर्वेद के ज्ञान को शुद्ध रखना है तो मुझे लगता है कि संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारी भाषा का जुड़ाव, अब तो इंजीनियरिंग, एलोपैथिक मेडिसिन, सभी बातों से भारतीय भाषाओं का जुड़ाव का आग्रह चल रहा है। तो आयुर्वेद में इसको विपरीत दिशा में नहीं तो इसी दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह बढ़ना चाहिए। मैं राजेश जी से कहना चाह रहा था कि पूरे बोर्ड पर देवनागरी में संस्कृत में कोई एक वचन अगर आ जाता है कम से कम 3 दिन में आखिरी दिन तक, तो बहुत अच्छा होगा। और ये जुड़ाव हमारा रहना चाहिए और स्पष्ट रूप से व्यक्त भी होना चाहिए। और एक बात, अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, उनको भी आयुर्वेद के बारे में उत्सुकता जागृत हुई है। इसलिए आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में एक हम लोगों की जो परंपरा है कि घर में भी कई लोग जानते हैं, अब वो ज्ञान घरों में भी कम हो रहा है। तो साथ साथ आयुर्वेद के सामान्य नुस्खों के बारे में जागरण का जो अभियान है, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ सहभागी है तो वो अपने कॉलेजेस से इस बात का एक अभियान चलाएं। और एक मुझे लगता है कि कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक पूरा ऐसा एक इंटर्नशिप जैसा रहना चाहिए, कंपटीशन भी कर सकते हैं कि अपने घर में या अपने परिसरों में नॉन आयुर्वेद के उपाय जो घरों में परंपरागत तरीके से करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, जो जितना अच्छा करेंगे उसकी कंपटीशन। तो मुझे लगता है इससे हम बहुत सारी चीज़ों का जागरण भी करेंगे, नई पीढ़ी को इससे जोड़ेंगे भी और इसका महत्व भी सामने आएगा। तो ऐसी कई बातें हैं, बहुत सारी बातें अच्छी हो रही है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Sunil Ambekar ji. Now, with much honor, I would like to call on stage, who is amongst us, Honorable Minister for Arts and Culture and Sports, Government of Goa, Shri Govindji Gavde, to deliver his speech. It's a very proud moment to the state of Goa for hosting this 9th World Ayurveda Congress and the Expo under the able leadership of Honorable Chief Minister of Goa in the support of the Vijnana Bharati and the Ministry of Ayush. Being as Art and Culture Minister, I welcome you in the tiny state with a big heart, because you all know that the Goa is very famous as far as the hospitality is concerned. Especially the foreign delegates who have come to attend this 5-day expo. I only would like to congratulate to the Vijnana Bharati and the Ministry of Ayush and all the volunteers who are involved in organizing this event and the expo to reach at the greater heights. Very important thing is that the awareness is very important to take this Ayurveda to a greater heights. Unless and until there is no awareness, it is very difficult us
to understand the common person to what is the importance in the Ayurveda. And that's why I treat you all as an amazing personality who have been here in this Shamiana or the Sabhagruha. I'm just comparing the amazing and the ordinary words why I've uttered. Ordinary words, people where the thought process has get to an end, and the amazing people from that point, these amazing people start thinking from the different direction. And it is our duty and it is a combined effort. We have to always put together to make this the program to a great success. Not only that, Honorable Prime Minister Adarani Narendra Modi has already said that unless and until we are not going to have the awareness program throughout the each and every corner of the country or the world, it's very difficult to know the whereabouts about the importance of the Ayurveda. I thanks to each and everyone whoever present over here, and it's very difficult to organize the event like this, and that to an international standard. But under the able leadership of the Honorable Chief Minister, by taking almost all the volunteers, all the colleagues from the cabinet as well as the office to a great to make this function a great success. I wish all the best to each and every delegates who have come from the nation as well as who have internationally flown to the state of Goa. And I wish all the pleasant stay, a comfortable stay in the state of Goa. Thank you one and all for listening patiently. Jai Hind, Jai Goa. Thank you so much, sir, for this energetic speech. Thank you once again. We are pleased to have with us Honorable Health Minister, Government of Goa, Shri Vishwajit Rane ji. He takes special efforts regarding the field of health in Goa. New initiatives, new projects in the field of health are pioneering because of Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane ji. May I request him to speak a few words on this occasion as Health Minister, Government of Goa. Honorable Chief Minister of Goa, the Chief Guest, respected Chief Guest for today's 9th Ayurvedic Congress and Arogya Expo being held here in Goa in association with the Government of India, Ayush Ministry. We miss the presence of Sonal ji here today, and I would have liked to also welcome dignitaries who have specially come and my colleagues. Shri Chetan ji from Punjab, Honorable Health Minister of Punjab, Shri Dayashankar ji, Honorable Minister for Health, Government of Uttar Pradesh, my colleague in the Cabinet, Shri Govind Gowde ji, Honorable Secretary, Government of India, Shri Kotecha ji, Ambekar ji of the Vidyan Bharati, who has played a very important role on the sidelines along with the Government of India and the Ministry of Ayush. I forgot to take our senior leader and the main person who actually brought Ayush into the state of Goa is Shripad Naik ji, who during whose tenure and with the leadership of our Chief Minister, we were able to take the Ayush Institute forward. I don't want to say much because Ambekar ji has already mentioned. I heard about him and it's a great pleasure being sharing a dais with him here today about the propagation of the science of Ayurveda. We are proud to have amongst us a Chief Minister who also is a doctor and who practices the science of Ayurveda. And also the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, which has given a global presence to the science of Ayurveda and the utilization of Ayurveda globally. Today people all over the world take this science very seriously. And I had talked to Kotecha ji some time back where we said that we would like to being a small state, we would like to do the convergence and we would like to move ahead in the direction and the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and take and have one of the first states in the country to have these combined OPDs and have treatment protocols, what you wish and what you desire.
And I think we are moving in that direction. I don't want to say much, but I would like to welcome each and every one of you globally and from our country who have come specially for the World Ayurvedic Congress. With the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and with the Vigyan Bharati, which has played a very important role in bringing this to this level and to reaching the 9th World Ayurvedic Congress and Arogya Expo, and the Ministry for Ayush, which is playing a very dominant role today in propagation of Ayush. And for the first time, Ayurveda is being taken seriously, and there are expos and there are conferences, there are interactions, and also globally people are carrying out different types of research on the science of Ayurveda, and we are getting to know about it. In this small state of Goa, we would like to, under the leadership of the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, today we are very happy to be a partner with the Vigyan Bharati and the Ayush Ministry, and to host this 9th World Ayurvedic Conference in Arogya Expo. With his leadership, I am sure we'll be able to make more strides in taking Ayurveda and also creating this wellness and holistic medicine approach. And Goa, I am sure, will lead the way and take it forward by being a small state, being a beautiful state, and taking it in a different way in line with the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I don't want to take much time. Everyone has said a lot, and I would like to conclude by once again welcoming you, and I would like to also request Koteja ji to give us new ways forward in the science of Ayurveda, new ways and techniques where we can do this convergence model in a very successful way. And I would like to thank the Honorable Chief Minister for always being supportive to all of us, and thanking the Government of India for selecting Goa as a destination for this 9th World Ayurvedic Congress and Arogya Expo. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Before we move on to last two speeches, we have two more events. Ministry of Ayush has taken an important initiative to increase awareness about medicinal plants amongst children. A comic book series with Professor Ayushman as the central character, conceived by the National Medicinal Plant Board, Ministry of Ayush, was unveiled to make children aware of the importance of medicinal plants and their use in home remedies. NMPB has released the first two series of comics, Professor Ayushman, and this comic book is helpful for educating children and others about traditional health care. In this series of comics, medicinal plants like aloe vera, tulsi, amla, giloy, neem, ashwagandha, brahmi, these are covered. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also appreciated this effort by Ministry of Ayush. May I request Honorable Chief Minister of Goa to release the third edition of Professor Ayushman. Before that, I would like to call upon stage CEO NMPB to come on stage, Dr. Tanuja Nesri, who is also a director of this particular project. And I request volunteers and officials from National Medicinal Plant Board to hand over copies of the third edition of Ayushman comic book series to the dignitaries. NMPB has brought out third series of comic book Professor Ayushman Returns, which is continuation of earlier series where Professor Ayushman returns to India after being struck in USA due to COVID-19 pandemic. Thank you. Today's inaugural function is marked with a momentous milestone in presence of Honorable Chief Minister of Goa, Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, and this august galaxy of ministers from all over India. May I now invite Dr. Tanuja Nesri, Director, All India Institute of Ayurveda, to exchange Memorandum of Understanding with Rosenberg's
European Academy of Ayurveda, Germany, represented here by Mr. Mark Rosenberg. This memorandum is to strengthen and further develop cooperation between the parties to study traditional systems of medicine and to set up a collaboration in the field of Ayurveda. Thank you, Dr. Tanuja. Thank you, Mr. Rosenberg. We're sorry for this interruption. May we move on? We have with us one of the senior most face of Government of Goa, Honorable Shri Shripad Naik, Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, who has also handled responsibility as Minister of Ayush. May I request him to speak a few words. Honorable Shri Shripad Naik. नमस्कार। नवे वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 के इस इनागुरल फंक्शन में मंच पर उपस्थित गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे जी, गोवा के आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावड़े जी, उत्तर प्रदेश के माननीय आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा जी, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर श्री चेतन सिंह जवरामा जी, मंच पर उपस्थित आयुष के सेक्रेटरी माननीय राजेश कोटेचा जी, विज्ञान भारती के माननीय श्री सुनील आंबेकर जी, नेशनल सेक्रेटरी विज्ञान भारती के श्री प्रवीण रामदास जी, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, मंच पर बैठे हुए आयुष इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, प्रदेश से आए हुए 60 कंट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव,
भारत के कोने कोने से आए हुए सभी आयुर्वेदा प्रेमी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि आप जहां बैठे हुए हैं, जहां स्थित है, ये मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरा फर्ज बनता है कि फिर एक बार आप सभी का स्वागत करें। भाई और बहनों, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का इतिहास आपके सामने मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखा। 2002 में शुरू हुई यह वर्ल्ड कांग्रेस की यात्रा कैसे कैसे यहां तक कैसे पहुंची, उसका इतिहास पूरा आपके सामने मेरे पूर्व वक्ता में आपके सामने रखा हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसी वक्त उन्हें पहला सबसे बड़ा जो काम किया कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस चल रही थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने घोषित किया था कि आयुर्वेदा हो, आयुष हो, बाकी सभी पैथी हो, ये हमारे इंडियन पैथी है और उसको बढ़ावा देना ये हमारा फर्ज है। इसलिए उन्होंने घोषित किया, इसीलिए एक नया मंत्रालय बनाने का काम उन्होंने हाथ में लिया और डिक्लेयर किया। तुरंत 6 महीने के बाद ये आयुष मंत्रालय बना के आज जिस तरह से आयुष का विकास, आयुर्वेदा का विकास जिस तरह से आज हो रहा है, ये सब उन्हीं के कारण है। और इसलिए आप सबकी ओर से फिर एक बार उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद में 2 वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई, कलकत्ता में हुई, उसका उल्लेख विज्ञान भारती के हमारे पदाधिकारियों ने किया। उसके बाद में गुजरात में हुई और आज मेरे खुद के स्टेट में हो रहे हैं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आयुर्वेदा ये क्या है, मैंने कहने की चीज नहीं, आप तो सब लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस विज्ञान को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और सोच तो वही थी। यहाँ के एक संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक पसायदान लिखा है। इस पसायदान में उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं खाली इंडिया के, भारत के लिए नहीं है, लेकिन पूरे देश को जो कुछ भारत के पास जो कुछ अच्छा है वो हमें देना है। और इसी तरह से जो कुछ अच्छा भारत ने उपस्थित किया, निकाला, रिसर्च किया, जो पूरे देश का देने का जो काम किया, ये आज भी वो बरकरार कर हमारे सामने खड़ा है। नया उदाहरण तो यही है, 2015 में जो यूनाइटेड नेशन में जो योग के बारे में रिजोल्यूशन पारित हुआ और योग आज पूरी दुनिया में आज चल रहा है, लोग उसकी मांग कर रहे हैं। यही तो है ना कि योग के बारे सबको अच्छी सेहत मिले, सब दुनिया पूरी वर्ल्ड सुखी हो, यही तो हमारे पूर्वजों का विचार था। और आयुर्वेदा के साथ साथ ये विचार सभी दुनिया में पहुंचाने का काम मेरे ख्याल से वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। मैं उनके सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आज 9वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हम यहाँ ले रहे हैं। मुझे याद है कि पहली जो दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे विज्ञान भारती के संगठन मंत्री श्री जयेंद्र सहस्त्रबुद्धे जी सहस्त्रबुद्धे उसमें थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। उसका बीच में गए 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, आज भी वो हॉस्पिटल में उसका उल्लेख हो गया है। इतने कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने जिस तरह से विज्ञान भारती को फिर इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस को जोड़ा और
आयुर्वेदा को पूरे दुनिया में पहुंचाने का अच्छी तरह से सभी को साथ लेके काम किया है। और इसलिए इसके बाद में जो कुछ आज हम इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आयुर्वेदा की वर्ल्ड में स्थिति देख रहे हैं कि आज जो हम चाहते थे कि पूरे दुनिया में आयुर्वेदा जाए, इसी के लिए जो प्रयास चाहिए वो आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। गोवा प्रदेश को तो आप जानते हैं एक शांतिप्रिय स्टेट है, सभी तरह की सुविधाएं गोवा में है और कई सालों से पहले आयुर्वेदा भी यहाँ अच्छी तरह से उसका आयुर्वेदा का प्रेजेंस था। इस संकुल को जो नाम दिया है दादा वैद्य करके, मैं उनका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि आयुर्वेदा की ताकत क्या है। और ये इतना सब होते हुए भी इतने सालों से हम पीछे क्यों रहे हैं? आयुर्वेदा को ऊपर लाने की कोशिश हर तरह से आप लोगों ने की है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक छोटी सी जोत, छोटी सी चिंगारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस ने रखी, यहां कुछ भी नहीं था, उसके साथ साथ भी आप लोगों ने जो प्रयास किया, हमारे वैद्य परंपरा यहाँ है, हमारे वैद्य यहाँ है, अनेकों ने इस आयुर्वेदा के लिए पूरा जीवन इसके लिए दे दिया और इसी के बदौलत आज आयुर्वेदा पक्के इस पर बुनियाद पर खड़ा है और आज तक जो प्रवास हुआ है उनके परिश्रमों के कारण है। उन सबको मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। मित्रों, गोवा आयुर्वेदा में बहुत आगे था। जैसा जिसका नाम मैंने दादा वैद्य जी का जो नाम लिया, तो आयुर्वेदा में कितनी ताकत थी इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब गांव में कोई ऐसी तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं थी, कोई साइकिल पे बैठ के जो कोई उसको बुलाने आता था वही जाते थे। ऐसा ही एक बारिश की रात थी और एक आइलैंड में वो उनको लेकर उसको एक बेटा, उसके पिताजी का बेटा उसके घर में गया, बोला पिताजी बीमार है, आपको आना है। 11 बजे के बाद वो उसके साथ कम से कम 7-8 किलोमीटर के इसके लंबे डिस्टेंस में साइकिल के साथ चले गए। वो नाव आइलैंड होने के कारण नाव में बैठ के उसके घर गए। उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, उसको कल सुबह बुला दिया उसको, और उन्होंने उसको देखा, परखा और दूसरे दिन आने के बाद उसके हाथ में एक नोटों का बंडल दे दिया और बोला कि उसको मेडिसिन कुछ मत दे दो, ये बंडल उसके हाथ में दे दो और बताओ कि जिस आदमी से आपने पैसा लिया है तो उसका पहले वापस करो, आपका जो डिसीज है, आपका जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आयुर्वेदा खाली मेडिसिन नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों ने किया हुआ एक चमत्कार है और इस चमत्कार के लिए सभी दुनिया को उसका फायदा देने के काम मेरे ख्याल से आप सब लोग कर रहे हैं। और जब उन्होंने अपने पिताजी को जब नोटों का बंडल दे दिया और कहा कि ये ऐसा डॉक्टर ने दिया है, तो वो उसके बाद में मेरे दूसरे दिन से उसकी प्रकृति ठीक हुई कि रोग किस तरह से आते हैं और किस तरह से उसका निवारण करना है। ये ताकत जो है आयुर्वेदा में इतनी है, ये कहने का मेरा इसका मतलब था। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए गोवा निश्चित तौर से हम सबके प्रयास से, मैं जब 7.5 साल आयुष में था, हमारे सेक्रेटरी राजेश जी कोटेजा, उनकी पूरी तरह के सहयोग था। सभी ने सहयोग देने के बाद जो आयुष का आज तक काम हुआ है, बहुत उन सबका उसमें सहयोग है, योगदान है। और आज हम ये सब लेके आगे जा रहे हैं। आयुष आज 60 कंट्रीज इसमें शामिल हुई है। अगले आने वाले 2 साल के बाद मेरे ख्याल से हम 100 का आंकड़ा पार करने का हमारा कोशिश रहना चाहिए, वो निश्चित तौर से रहेगी। गोवा बहुत निसर्ग संपन्न प्रदेश है। हमारे आयुष मंत्रालय के प्रयास से हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ कर कमलों द्वारा होगा। नया एयरपोर्ट का भी काम बनेगा। उसके साइड में सिंधुदुर्ग में और एक इंस्टीट्यूट हमने लाया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए, कि यहाँ जो निसर्ग संपन्नता है
यहाँ का जो सह्याद्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उसका सृजन हो और नए तरीके का प्लांटेशन हो, जो जो वनस्पतियाँ हमें चाहिए तो यहाँ उसका उत्पादन हम कर सकते हैं, रोजगार भी इससे और उसे दे सकते हैं। इसी तरह से जो कुछ गोवा में हुआ है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हुआ है, वेलनेस सेंटर का भी काम अच्छी तरह गोवा सरकार ठीक तरह से काम कर रही है। और बोलने का मतलब यही है कि हम सब और थोड़ा जोर लगाए तो निश्चित तौर से आने वाला समय ये आयुर्वेदा का हो जाएगा और जो प्रयास आपने इतने सालों से लिए हुए है उसका फल निश्चित तौर से हम सबको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय। Thank you very much, Honorable Shri Shripad Naik. We have with us such a personality who is strong advocate of Ayurveda, who patrons Ayurveda, who himself is from the same fraternity, same field, who has a special vision for Goa with respect to health, along with all the other fields. A dedicated, disciplined, determined, young and charismatic leader who has taken a keen interest in making this event happen and who paid attention to all the nitty-gritties so that everything goes on well. The Chief Minister of Goa, Honorable Dr. Pramod Ji Sawant, I kindly request him to deliver his inaugural address in this 9th World Congress, World Ayurveda Congress and Expo, Ayurveda Expo. नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। For 9th edition of the World Ayurveda Congress, along with me, Sri Shripad S.O. Naik, the Minister for the State, Tourism and Ports, Shipping and Waterways. My colleague in Government of Goa, Minister Sri Vishwajit Rane, Minister Sri Govind Gavade, Sri Chetan Singh Jayaramanji, Minister for the Health and Family Welfare, Medical Education and Research from the Government of Punjab, Sri Dhyanshekar Mishra Ji, Minister for the State for Ayush, Food Security and Drug Administration from Government of Uttar Pradesh, Sri Vaidya Rajesh Koteja Ji, the Secretary for the Ministry of Ayush, Sri Sunil Ambekar Ji, the mentor of Vigyan Bharati, Dr. Shekhar Mande Ji, the President of Vigyan Bharati, Dr. Rohit Sane, MD of Vaidya Sane Ayurveda Laboratory, Sri Ram Sharoff, Director of Charak Pharma, Sri Arvinda Varcheswe-ji, MD of Sri Twata Limited, Dr. E. and Nilkamal Mosa, Dr. Vaidya Rakadamanji, Ayurveda Vaishala, Sri Gulraj Bhatia, the President of Healthcare, and all the other dignitaries on dais, Dr. Jaishankar Narayan Ji, he is the Managing Trustee of World Ayurveda. Other dignitaries on a stage, off the stage, and all my friends and media. सबसे पहले आप सभी को देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट रेट 75 और गोवा मुक्ति के 60 साल गोवा एट रेट 60 इस पावन पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जीवनदायिनी मांडवी नदी तथा विभिन्न प्रकारों की जीव संपदा से प्रफुल्लित वेस्टर्न घाट के गोद में बसा इस गोवा राज्य में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्र तट, अंतर्मुख करने वाले जंगल, खेत खलियान और शांति और भक्ति को आकर्षित करने वाले मंदिर तथा प्रार्थना स्थल गोवा की कीर्ति को बढ़ावा देते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। इसी उक्ति को यथार्थ बनाते हुए इस परशुराम भूमि गोमंत भूमि में औषधि वनस्पतियां और जड़ी बूटियों का
एक समृद्ध भंडार यह कहना उचित होगा। मैं विज्ञान भारती और आयुष मंत्रालय का भारत सरकार को ऋणी हूँ। उन्होंने गोवा राज्य सरकार का इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन का हमें अवसर दिया, हमें मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के उस उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक क्षण पर मैं गोवा की जनता के ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा राज्य का मुख्यमंत्री तथा स्वयं एक वैद्य होने के नाते मुझे इस समय एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आनंद प्राप्त हो रहा है कि गोवा राज्य में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों से इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता, सभी संस्थाएं जिस तरह से लगी है, मुझे लगता है इस आगे आने वाले 4 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पांस सभी लोगों से इस कार्यक्रम में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं विज्ञान भारती का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। लास्ट 8 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस उन्होंने जिस तरह से 18 साल से आयोजन कर रहे हैं और आयुर्वेद पूरे देश में और विदेश में उसका प्रचार और प्रसार आप सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप हमेशा के लिए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार पूरे देश भर और विदेश में लगे हुए हैं। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जिस तरह से 4 दिन का आयोजन का साइंटिफिक सेशंस और बाकी वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो रहा है, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स सभी तरह से बड़ी मात्रा से यहाँ पे आयोजन में लगे रहेंगे। Once again, I welcome the international delegates, those who are participating from 35 countries for this World Ayurveda Congress. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has positioned India at a greater level by making the world aware of our treasure of knowledge. We as a stakeholder of Ayurveda and allied medicine shall remain grateful to Modi ji for setting up of Ayush Ministry for the first time in India's independence. His consistent efforts have led to observing the 21st June is every year as the International Day of Yoga. The United Nations has adopted this day for the well-being of for the humanity, and more than 180 nations performing yoga together on this day. I also congratulate Honorable Prime Minister for his vision to grant the Ayush visa to the people from around the world to visit India for Ayush-based treatment and wellness. We have been also fortunate that Sri Sripad Babu Naik was the first Minister of State for Ayush, and his efforts for propagating Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani and Homeopathy are indeed noteworthy. With the continuous support of the central government, and Goa State has got the honor of having second All India Institute of the Medical Science Ayush Hospital. This hospital also undergraduate and postgraduate PhD course wherein the local Goan students will have 50% of the reservation in admission. Ayurveda, in my opinion, is the biggest ambassador of brand India in the world arena. We all perform the various roles as a student, teachers, researchers, practitioners, manufacturers, distributors, etc. And being the stakeholders in the field of Ayurveda, it is our duty to propagate this system of medicine. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted
the Ayush doctors at these places. Ayurveda shows us the path to live the healthy way of life. As the Ayurveda practitioners, our motto is Swasthasya Swastha Rakshanam Aturasya Vikara Prashavanam. To maintain the health of healthy individual and to treat the disease of the patient. Ayurveda follows the concept of Dinacharya, which emphasizes on the natural cycle like waking, sleeping, working, meditations, etc. And Rutucharya, and which emphasizes on managing the dietary intake, sync with the seasonal change are the important for health. Ayurveda is also emerging and getting the recognized at the global level, and I urge the Ayurveda practitioner to explore the opportunities. The people are also giving the great importance to Ayurveda and meditations in terms of the pre-pregnancy, the pregnancy and post-pregnancy period to have the healthy progeny. The Garbha Sanskar is being referred as commonly is in itself exclusively area that can be concentrated upon and pursue as a successful career by the practitioner. Through the discourse and interactions in these 4 days, we must spread the word about the greatness in our traditional system of medicines, which can show a way the world create the healthy and awakened society. I am aware that we see today in the next 4 days the result of unstinted support and hard work of several individuals and institutions. I thank all of them from the bottom of my heart. To all the delegates, and you should not only participate in the Ayurveda Congress and with your mind and soul, but also find a time to explore this iconic place. I extend my best wishes for this great event. हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुम्ही सगळ्यांनी ह्या 4 दीस जावपी आयुर्वेद काँग्रेसीक मोठ्यान वांटो घेवचो आणि हांगा जावपी एक्सपो समेस्त गोंयकारांनी तो पळोवचो. मैं सबसे लास्ट में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं याद करता हूं जो आज एक्चुअली जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऑफ विज्ञान भारती जयंतराव सहस्त्रबुद्धे, जो उन्होंने ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में होनी चाहिए इसके लिए उनका प्रयास था और आज ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में हो रही है. लेकिन जयंतराव सहस्त्रबुद्धे जो पायनियर था इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का, जो गोवा में होने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो आज इस कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पा रहे, खुद उनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं. मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के वास्ते एक कार्यक्रम इतना बड़ा यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है. आगे आने वाले 4 दिन में हम इस आयुर्वेदा पूरे सभी देश विदेश में हम माननीय मोदी जी की जो थीम है, जो हर दिन हर घर आयुर्वेदा और हर दिन हर रोज हर एक के लिए आयुर्वेदा, यही थीम आगे लेके आयुर्वेदा को आगे लेके जाएंगे. मैं फिर एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स देता हूं. उन्होंने आयुर्वेदा डे मनाने के लिए पूरे देश भर में उन्होंने नेशनल आयुर्वेदा डे भी मनाया और हर दिन हर घर आयुर्वेदा पहुंचाने के लिए बड़ा योगदान मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री का रहा. जय हिंद, जय आयुर्वेद. Thank you so much, sir, for this encouraging words and this inaugural address. Thank you once again. I now request Trustee World Ayurveda Foundation, Shri Ranjit Puranik, to deliver words of thanks. This will be followed by National Anthem. Please don't leave the auditorium.
Friends, it's been a very long morning. We're certainly aware of the entire fact. I would begin my vote of thanks for the journey that World Ayurveda Congress in Goa has taken so far and foreseeably is now going to be taking in the next 4 days, and for a phase that ushers in a very progressive Ayurveda sector in not only Goa but also India. I would begin by thanking our chief patron, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. It was sometime in the month of April that we met Dr. Pramod Sawant. In the first sentence itself of us uttering that we proposed to have the World Congress in Goa, he had already said yes. And since then, the Goa government, all the ministers, all the ministries, whether it's the health ministry, whether it's the arts and cultural ministry, notably the GTDC, this is the entire infrastructure that is at their behest. And I must, on behalf of not only World Ayurveda Foundation, but all the delegates and the Ayurveda sector as a whole, must thank the chief patron, Dr. Pramod Sawant, to ensure that World Ayurveda Congress becomes a reality right here. And this is indeed a great credit to him and his support to Ayurveda as such. I would fail in my duty to also acknowledge Mr. Shri Sarbanand Sonowalji, the Union Minister for Ayush. A single letter from Sarbanandji has ensured an interest nationwide from all health and Ayush ministers to come to Goa. In the next few days, all of us are going to meet the health ministers from Jharkhand, Manipur, as well as Rajasthan. And countless more telephone calls have come in, and countless more could not make it because of either legislative or some other engagements. But the kind of interest that has been generated by another chief patron of 9th World Ayurveda Congress, Dr. Sarbanand Sonowal, is completely awesome. I would again acknowledge right here the absolute and total ownership of the World Ayurveda Congress, its success that has been undertaken by the Ministry of Ayush, Government of India, is especially led by Rajesh Kotecha and his entire team of Ayush officials. I think it has been a tremendous amount of boost. They have ensured that we did not only do our best, but did a little more. And this particular program, this heavy program guide that you have, this guide that was explained by my senior colleague, Professor Anup Thakur, all of this is a creation of this kind of encouragement. I must thank the ambassadors, the ambassadors who have come all the way from Delhi to witness what Ayurveda sector is all about, to see the Arogya Expo, and also, probably in all probability, also take Ayurveda overseas. The international delegates who have graced this entire opportunity, this forum, need to be acknowledged because at a very short notice of only 3 and 4 months, they have ensured that their itineraries had Goa on their mind. Chief Minister, sir, ministers on the dais, your time is well spent. Your entire support has been acknowledged. By today, our registration is crossing 3,700, and over 130 international students studying Ayurveda in India have been facilitated by Ministry of Ayush and are also present here. There are traditional healers who have come here. There are farmers who have come here. And the entire caucus, I will call it, of discussions on all dimensions related in the Ayush sector is all because of your encouragement and support. Friends, I would fail in my duty to thank the Ayurveda physicians, the scientists, the scholars, the universities, the councils, not only just related with Ministry of Ayush, but even of the allied ministries who have ensured that this forum is growing and growing every particular edition. And we look forward to see a greater World Congress in times to come. Dr. Mahindra Munchpara, Minister of State, Ministry of Ayush, would also be joining us tomorrow.
and he is a very keen observer of Ayush sciences, an absolute encouragement in talking to him and seeing his ideas to real ideas in public health. And I'm sure this is going to augur well in times to come. Again, I would fail in not acknowledging my colleagues on the dais and off the dais and in the entire Arogya Expo, that is the corporate sector in Ayurveda, who have this time embraced the World Ayurveda Congress Forum with both hands. And their unstinted support, continuous support, and growing support is what sees World Ayurveda Congress growing and growing. Friends, with these few words, I know there are many people that I have not thanked, and I'm sure I have missed many agencies also, like the civil services, the police, the security agencies, the municipal corporation of Panji City, the health department, the protocol department, members of the press, the electronic media, Doordarshan, NIC, all of them have contributed their might to ensure that we see this inaugural function not only live televised, but also well spread out. The local organizing committee of the World Ayurveda Congress in Goa has worked very hard. Almost 116 outreach programs have been completed by them, and they have reached through all their camps over 20,000 patients. Chief Minister, sir, this effort that even you have actively supported and engaged in social media, this effort is going to augur well to the free clinics that have been made available in Arogya Expo. I am sure as a culmination, all of this, we are going to have a great 4 days of not only network, but a knowledge festival that all of us are going to walk back with. Thank you once again. I would like to thank all the ministers on the dais, Govind Gowdeji, your Arts and Culture Department, Vishwajit Raneji, the entire Health Department. I am sure the officials might complain that we have bothered them a bit much, but trust me, they have been there for us and have taken good care of us, and that's something that really counts. Shripadji, in spite of not feeling all that well, in spite of feeling ill, you have still shown that the Ayush flame is not only in you, but shining bright. We wish you an early recovery to yourself, and thank you for your time to come here. And once again, on behalf of World Ayurveda Foundation, we are continuously mentored by Vigyan Bharati. We are continuously mentored. We have continuously been monitored by Jayant Rao to ensure that we always excel. And I can now realize, Sunil Tambeji, meeting you in person, that the kind of mentorship, the kind of encouragement that you've given World Ayurveda Foundation to grow, we can see that. I do thank you from your very busy schedule that you have spared time and come across. Thank you one and all, and we look forward to following the Chief Minister immediately after the national anthem for the inauguration of the Arogya Expo. So that's a program that will now follow. Thank you. Before we start with national anthem, I have an announcement to make. There is Principals Conclave at National Institute of Oceanography, Dona Paula, which will start at 2 p.m. Delegates arrangement for lunch is made at first floor VIP Hall, Kala Academy. So all the principals are requested to proceed to Kala Academy and then to NIO for the meet. Registrations for the same will be done at Kala Academy. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you one and all. Have a great experience at Expo and happy stay in Goa. Thank you.
Jai